बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Students, today's topic is natural numbers and whole numbers. What are natural numbers? The numbers used for counting objects are called natural numbers or counting numbers. वो नंबर्स जो डेली लाइफ में हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे हम या तो नेचुरल नंबर कहते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. एंड यू नो वेरी वेल वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन. If I have some objects, I started counting with 1. So natural number starts with 1. Okay. Now, what is the set of natural number? अगर मैं natural numbers का set बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? You know very well that we made set in curly bracket or we also called it braces. I will open curly bracket and write number 1 2 3 4 and of course there is no end. All the numbers are included in natural number. Starts from 1. Natural number starts from 1 and then goes on and on. So this is an infinite set. I told you about infinite set. जो सेट एंड ना हो चलता जाए उसको इनफाइनाइट कहते हैं. सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन बिकॉज इट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल इज starts with n, so the name of this set is n. We denote this set, the set of natural number by n. Okay. अब आप पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. इवन नंबर्स starts from 2. We start from 2 and leaving one number we goes on and on. Goes on 2 4 6 8 and then so on. Even numbers are those which are divisible by 2, exactly divisible by 2. It starts from 2 And then we leave one number. Okay, these are even numbers. So even numbers set is denoted by E. And we also know that what is odd number. Odd number starts with 1 And then we leave one number and goes on and on. 1 3 5 7 and so on. This is the set of odd number. When I put odd numbers in braces, then it is a set of odd number. When I put even numbers in braces, then it is the set of even number. When I put natural number in braces, then this is the set of natural numbers. Now students, look at this. This is a set of natural numbers which starts from 1 and ends on 100. This is a set of even number which starts from 2 and ends on 100. And this is a set of odd numbers which starts from 1 and ends on 99. Natural number is a set in which every digit is present from 1 to 100. Even number is a set in which even numbers are there starting from 2 and skipping one number goes up to 100. There is no 1, there is no 3, there is no odd numbers in this set. And this is the set in which all the odd numbers are there from 1 to 99. And in this set there is no even number. Okay, so I can say that Even number is a proper subset of natural numbers. आपको पता है proper subset क्या होता है? Proper subset वो subset होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स में मौजूद हों, अब सुपर सेट में मौजूद हों. तो इवन नंबर के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स में मौजूद हैं. So even number is a proper subset of natural numbers. बिल्कुल इसी तरीके से ऑड नंबर्स के भी तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद हैं और नेचुरल नंबर में कुछ और भी ज़्यादा हैं. इसी तरीके से इवन नंबर के तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में मौजूद हैं और नेचुरल नंबर में कुछ और भी ज़्यादा हैं.
Even number is a proper subset of natural number. Similarly, odd number is also a proper subset of natural numbers. Now students, what are whole numbers? The numbers consisting of 0 and all the natural numbers are called whole number. इसका मतलब क्या है? तमाम natural numbers और ज़ीरो से स्टार्ट हो और तमाम नेचुरल नंबर्स आगे हों तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं. अगर मैं सेट बनाऊँ होल नंबर्स का तो आई विल पुट ऑल दीज नंबर्स इन द ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट एंड आई विल डिनोट इट विद द लेटर W is equals to 0 1 2 3 and so on. This is the set of whole number. Now if you see that natural number starts from 1, natural numbers starts from 1 2 3 and so on, and there is one more element in whole number, 0. Whole number starts from 0 1 2 3 4 5 6 and so on. So I could say that natural number is a proper subset of whole numbers. नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर के सेट में मौजूद हैं और एक एलिमेंट ज़्यादा भी है 0. Now students, there are some rules for natural and whole numbers. First rule is when two natural numbers are added, the sum is always a natural number. जब हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जवाब भी नेचुरल नंबर ही आता है. For example, 90 plus 10 is equals to 100. 90 is a natural number, 10 is a natural number, and the result is also a natural number. बिल्कुल इसी तरीके से when two whole numbers are added, then the answer is whole number. 0 plus 10 is equals to 10. 0 is a whole number. 10 is also a whole number. 10 whole number की सेट में आता है ना, तो 10 is also a whole number and the result is 10. It is again a whole number. So whenever we add two natural numbers, the result is again a natural number. Whenever we add two whole number, the result is whole number. This property is called closure property of addition. This property is called closure property of addition. Second is when the natural number is subtracted from another natural number, the result may not be a natural number. जब आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास नेचुरल नंबर ही आंसर आए. फॉर एग्जाम्पल 90 minus 10 is equals to 80. 90 is a natural number, 10 is a natural number, 80 is again a natural number. यहाँ पर तो हमारी ये बात नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया नेचुरल नंबर में से तो नेचुरल नंबर आ गया. बट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 50 minus 60, so the answer is minus 10, and minus 10 is not a natural number. Again 80 minus 80 is equals to 0. 0 is not a natural number, 0 is a whole number. So the closure property does not apply on subtraction.